Good morning, students of class 12th. Students, today we are taking chapter number 3, the topic fertilization and implantation. Fertilization, the definition, as we know that the fusion of male and female gamete is called fertilization. So in the case of human beings, we can say that the fusion of sperm and ovum and forms zygote, then becomes into embryo. This is called fertilization. An embryo fertilized there. During copulation, semen is released by the penis into the vagina. This is called insemination. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enters into the uterus, and finally reaches the junction of the isthmus and ampulla. This is called ampullary isthmus, junction of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to ampullary isthmic junction, where fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. This is the reason why not all copulations leads to fertilization and pregnancy. So that is why all time क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. हमने आपको एक साइकिल बताई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बताई थी उसमें कुछ पीरियड बताया था, टाइम पीरियड. सो वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कि फर्टिलाइजेशन जो होता है पॉसिबल होता है कि उस टाइम पर ओवम और स्पर्म जो है वो फ्यूज़ कर सकते हैं. दे कम एट दैट single time only, right? The process of fusion of a sperm with the ovum is called fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm. तो ये जो structure है, it is a structure of ovum. You can see here the membrane, green color membrane. You can see a green, but not green. It is just mentioned here. So this is called zona pellucida. Zona pellucida membrane क्या करती है? ये स्पर्म्स को एंटर करने से क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है कि सभी स्पर्म्स जो इसमें एंटर नहीं कर सकते. तो यू कैन सी कि यहाँ पे जो स्पर्म है उसका जो हेड है वो एंटर कर रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है. तो इसका कॉल्ड पेनिट्रेशन, कि हर एक स्पर्म क्या करता है, पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, और कोई एक सिंगल स्पर्म ही होता है जो क्या करता है, ओवम तक पहुँच पाता है और उसे फर्टिलाइज करता है, उसे फ्यूज़ करता है. Zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperm. और जैसे ही कोई एक स्पर्म ओवम को जाके फ्यूज़ कर देता है, उसके बाद जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है ये अदर स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक कर देती है. ठीक है. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. So, ये जो sperm होता है, sperm के head में कुछ ऐसे enzymes होते हैं जो zona pellucida membrane को break करने में help करते हैं. तो जो sperm, क्योंकि millions of sperms होते हैं, तो जो स्पर्म सबसे पहले जाकर जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके पेनिट्रेट करके ओवम पर फ्यूज़ कर देता है, वही क्या होता है, विनो करता है. दिस इंड्यूसेस द completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also an equal result of the formation of second polar bodies and a haploid ovum. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together form a diploid zygote. ठीक है. तो haploid number is half number of chromosomes. ठीक. तो half number of chromosomes are present in male gamete and half number of chromosomes are present in female gamete. So the both gametes are haploid in condition. When they fuse together, it will become diploid. Means the number of chromosomes will just double. How many chromosomes will there in the zygote? Just double. One has to remember that the sex of the baby has been decided at the stage itself. Let us how, as you know, the chromosome pattern in the human female is XX and the male is XY.
ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि जो एट द टाइम ऑफ फ्यूज़न, जब फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसी टाइम पे क्या होता है, जो बेबी का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन हो जाता है कि मीन्स इट विल बी बेबी गर्ल, ठीक है, और बेबी बॉय. It depends on the XX and XY. When X and X combine together forms girls. When X and Y combines together forms boy. Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the 6 chromosome X, whereas in the male gametes the sex chromosomes could be the either X or Y. Hence, 50% of sperms carry the X chromosome, while other 50% carry the Y chromosome. After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry the XX or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. The zygote carrying XX would help into a female and baby, and XY would form a male. That is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. The mitotic division starts. The zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula. The morula continue to divide and transforms into blastocysts. As it moves further into uterus, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to trophoblast called the inner cell mass. The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as the embryo. After attachment, the uterine cells divides rapidly and covers the blastocyst. As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. Okay, so students, you can see here in this diagram, after the formation of zygote, you can see A zygote, A is ovum, B is you can see here sperms are coming for fertilization, C zygote formation here, and D cleavages are there कि इसमें डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है. जाइगोट होते हैं वो 2, 2 से 4, 4 से 8 से 8 से 16 मीन्स यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है सेल में, और एक ये मोरूला में कन्वर्ट हो जाती है. मोरूला में बहुत कितनी सारी 32 सेल्ड स्टेज आ जाती है. दिस इज़ कॉल्ड मोरूला स्टेज. यहाँ पे मोरूला बनता है. मोरूला के बाद क्या कौन सी ब्लास्टोसिस्ट बनती है. इसमें ब्लास्टोसिस्ट के बाद इसमें गैस्ट्रुला स्टेज आते हैं और एक फिर एम्ब्रियो में ये कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो फिर यूट्रस में जाके एम्बेडेड होता है और वहाँ पर ये ग्रो करता है. Pregnancy and embryonic development. After implantation, finger-like projection appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue becomes integrated with each other and jointly form structural and functional unit between developing embryo and maternal body called placenta. ठीक है, तो placenta क्या? It is a connecting link between mother and baby. It forms by the chorionic villi and the uterine tissue. The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. The placenta is connected to the embryo through the embryo connected through an umbilical cord which helps in the transfer of substances to and from the embryo. Placenta also acts in endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin hormone. This is called HCG. HCG हार्मोन, इसका जो फुल फॉर्म है आपको इसे लर्न करना होगा. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है. व्हाट इज़ द expanded form of HCG, human chorionic gonadotropin hormone. Human placental lactogen hormone, estrogen hormone, progesterone hormone, etc. These hormones are secreted by the placenta. ठीक है, it work as an endocrine tissue at that time
And the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood. So during the pregnancy, these hormones will increase in the blood only at the time of pregnancy. So these three hormones, HCG, HPL and relaxin are produced at the time of pregnancy only. Okay, not all time, only in pregnancy. Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth and metabolic changes in the mothers and maintenance of pregnancy. So these hormones are released by the placenta and other uterine walls of the uterine walls. So it helps in the maintaining of pregnancy and it helps in the helping of growth of the embryo also. Immediately after implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer of endoderm. ठीक है, अब यहाँ पे ectoderm, endoderm and mesoderm layers develop हो जाती हैं. These are germinal layers. ठीक है, on the basis of ectoderm, mesoderm and endoderm we can differentiate the organism in the diploblastic organism or triploblastic organism. When two germinal layers are present, the organism will be diploblastic, and when all three germinal layers are present in the embryo like ectoderm, endoderm and mesoderm, it is found in the human beings. So the animals will become called triploblastic animals. Triploblastic. So it needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells, which have the potency to give rise to all of these tissues and organs. ठीक है, अब इन जर्मिनल लेयर्स से ही क्या होते हैं, बॉडी के अलग अलग जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो बनना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और यही जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं स्टेम सेल्स बनाने में हेल्प करती हैं. स्टेम सेल्स जो होती हैं क्या करती हैं, बॉडी के ऑर्गन टिश्यूज़ में हेल्प करती हैं बनाने में. What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months. Do you know many months pregnancy lasts in dogs, elephants, cats? ठीक है, तो जो काफ़ी लॉन्ग लास्ट प्रेगनेंसी देखने को मिलती है डॉग्स में, एलिफेंट्स में, है ना, cats में, but in human beings we can see only 9 months of pregnancy. This is called gestation period. The pregnancy period is called gestation period. It will only 9 months in human beings. In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the second month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. By the end of 12 weeks, most of the major organ systems are formed. So first of all, heart is formed. Second is limbs formed, and third is in the coming 12 weeks क्या होता है, पूरा organ system जो होता है वो develop हो जाता है. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. By the end of 24 weeks, the body is covered with the hairs, eyelids separate, and eyelashes are formed. By the end of the 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. Now the next is parturition and lactation. Parturition is the delivery of baby. The average duration of human pregnancy is around 9 months, which is called the gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes explosion delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus is called parturition. Parturition is induced by complex neuroendocrine mechanism. The signals for parturition originates from the fully developed fetus and the placenta, which induces mild uterine contraction called fetal ejection reflex. ठीक है, तो जब क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो फुली ग्रो हो जाता है, तो जो यूटेराइन कैविटी है वहाँ पर ये डेवलप होता है, पूरा ग्रो करता है, और वहाँ से कुछ रिफ्लेक्सेस आना स्टार्ट हो जाते हैं. मीन्स कुछ साइन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि नाउ जो बेबी है वो फुली मैच्योर्ड है एंड वो क्या होता है, बॉडी से बाहर आने के लिए रेडी है. सो दिस इज़ कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि कुछ रिफ्लेक्शंस, कुछ साइंस आना बॉडी से स्टार्ट हो जाते हैं. द ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूटेराइन मसल्स एंड causes strong uterine contractions. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक रोल होता है. ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इसे बर्थ हार्मोन भी कहेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कर रहा है,
कि वो रिफ्लेक्सेस को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a stronger and stronger contraction. This leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. Parturition. So soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. What do you think the doctors inject to induce delivery? The mammary gland of the female undergoes differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, जो बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल से बेबी का डिलीवर होता है और उसके बाद जो प्लेसेंटा होता है उसे बेबी से, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क कर रहा था बेबी और मदर की बॉडी में, उसे वहाँ से सेपरेट आउट कर दिया जाता है, उसे वहाँ से कट आउट कर दिया जाता है. आफ्टर लैक्टेशन process will going on, this helps the mother in feeding the newborn. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum. The first milk is called colostrum. It contains several antibodies which protects the infants means newborn baby, which protects the infants from the various kind of antigens which enters in the infant's body. ठीक है, तो बॉडी जो बेबी होता है उसकी बॉडी में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस डेवलप करने का काम करता है. You can see fertilization and implantation कि ये क्या है, zona pellucida membrane है, it is the outermost membrane of the ovum. You can see sperm, ये जो हेड है, हर एक स्पर्म क्या कर रहा है, पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है. कोई एक स्पर्म होगा जो बहुत जल्दी पेनिट्रेट करके ओवम को जाके क्या कर देता है, फर्टिलाइज करता है. उसके बाद जोना पेलुसिडा क्या करती है, आउटर जो मेम्ब्रेन है ओवम की, वो बाकी सारे स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देती है. ठीक है, तो ये सब अभी हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द मैच्योर ओवम. इट बिगिंस विद स्पर्म एंड एग कोलिजन एंड एंड्स विद द प्रोडक्शन ऑफ mononucleated single cell called zygote. Almost always fertilization occurs in ampullary portion of the fallopian tubes. Here female and male gametes form zygote, then embryo, and it converts into baby. You can see here this chart. ठीक है, age of embryo in weeks. ठीक है, तो फर्स्ट वीक, सेकेंड, ये देखो थर्ड वीक. एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है. जाइगोट में फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीवेजेस बन रहे हैं. यू कैन सी हियर, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये क्या है, कौन सी फेज आ जाती है, ये दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रुला फेज. इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. जर्मिनल लेयर्स को बनाने में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म को हेल्प करता है. नाउ फर्स्ट वीक यहाँ से देख लेंगे हम कि फर्स्ट वीक में क्या है, हार्ट डेवलप हो गया है. उसके बाद आई, लिम्स डेवलप हो गए हैं, देन ईयर डेवलप हो गया है, टीथ डेवलप हो गए. नहीं, टीथ नहीं होंगे ना, केवल वो जो सॉकेट होता है, टीथ सॉकेट डेवलप होता है. एक्चुअली जॉ रीजन जो होता है वो डेवलप होता है. ठीक है, उसके बाद लास्ट मंथ में देखेंगे ब्रेन डेवलप हो गया और उसके बाद बेबी जो है फुल मैच्योर हो गया. Okay students, thank you.